नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल राय है। मैं नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में लिवर स्पेशलिस्ट हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन कुमार हूँ। मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में एक कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। ये फैटी लिवर एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें लिवर में धीरे धीरे करके फैट जमा होने लगता है। अधिकतर लोगों को लगता है कि अगर उनका लिवर फैटी है तो पेट की जो सारी की सारी प्रॉब्लम, भले ही वो डाइजेशन से हो चाहे वो गैस से हो, सब इसी बीमारी के कारण होता है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैटी लिवर के लिए कोई दवाई अभी तक बनी नहीं है। क्या इसका इलाज संभव है? जी हाँ, इसका इलाज बिल्कुल ही संभव है। हमें पता है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है, तो जो बीमारियां इसको कॉज कर रही हैं, अगर हम उनको अच्छे से कंट्रोल करें तो ये बीमारी को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और जिनको ये बीमारी थोड़ा आगे बढ़ चुकी है उसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि हमें करीब कम से कम 30 मिनट का डेली एक ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब तेजी से जो है वो रोज के रोज टहलना चाहिए। जिनका वजन ज़्यादा है उन्हें अपना वजन कम करना चाहिए। अच्छा खान पीन और व्यायाम करने से फैटी लिवर को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। Mandukasana or frog pose. Sit in Vajrasana pose. Place your right palm on your left palm. Keep them on the navel. Now press your stomach inwards. Exhale and bend forward. Hold your breath and position for some time. Touch the ground by your nose and forehead. Slowly inhale and come back to the starting position. We will slowly move to the child pose or Sishu Asana. Sit on your heels, keeping your hips on the heels, bend forward and lower your forehead to the floor. Keep the arms alongside your body with hands on the floor, palms facing up. Gently press your chest on the thighs, hold, slowly come up to sit on the heels, uncurling vertebra by vertebra and relax. Boat pose. Sit in a relaxed position with your feet together and arms beside your body. Take a deep breath in as you exhale. Lift your chest and feet off the ground, stretching your arms towards your feet. Your eyes, fingers and toes should be in a line. Feel the tension in your navel area as the abdominal muscles contract. Keep breathing deeply and easily while maintaining the pose. As you exhale, come back to the ground slowly and relax. Downward facing dog pose. Come to a position where your back forms the tabletop and your hands and feet from the legs of the table. As you breathe out, lift the hips up, straightening the knees and elbows. Form an inverted V shape with the body. Hands are shoulder wide apart. Feet are hip wide apart and parallel to each other. Toes point straight ahead. Press your hands into the ground. Widen through the shoulder blades. Keep the neck lengthened by touching the ears to the inner arms. Hold the downward dog pose and take long deep breaths. Look towards the navel. Exhale, bend the knees and return to the tabletop position. Cat cow pose. Begin on your hands and knees in table pose with a neutral spine. As you inhale and move into cow pose, lift your seat bones upward. Press your chest forward and allow your belly to sink. Lift your head, relax your shoulders away from your ears and gaze straight ahead. After that,
Again, as you exhale, come into cat pose while rounding your spine outward, tucking in your tailbone and drawing your pubic bone forward. Release your head toward the floor. Just don't force your chin to your chest. After that, relax and come to the basic position. Locust pose. Breathing in, raise the both leg and keep the leg straight and do not twist the hip. Hold and keep breathing. Breathing out and bring the leg down. After that, again breathing in and with some momentum, lift both legs up as high as possible, keeping the knee straight. Hold. Breathing out, bring the legs down. Take the arms out from underneath and rest.